Hello and welcome. You're watching News 9 Live. Our top story at this hour. The India Bloc leaders staged a protest against the suspension of 146 MPs at Delhi Jantar Mantar. These protests have been going on since the MPs were suspended. Today was also in protest against the suspension of MPs, and therefore leaders of the India Bloc got together at Delhi's Jantar Mantar to protest. इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, जो लोक लाज है उसको कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने प्रगतिशील राष्ट्रवादी संगठन हैं उनको सबको इकट्ठे होकर इस चीज़ के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज़ से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की ज़रूरत है। नहीं, मैसेज यही देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो काम करें, पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं उनको अब सस्पेंड कर दिए, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो एकदम आई कैन अंडरस्टैंड 5-6 अगर फिर ठीक बोल सकते हैं सस्पेंड करें, बट 140-150 के करीब एमपीज़ को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये मैसेज तो पब्लिक को जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप पूरे एमपीज़ को ही बाहर निकालेंगे तो फिर पार्लियामेंट चलेगा कैसा। उल्लंघन तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो बात तो सुनना चाहिए ना, हमें हर आदमी का इख्तियार होता है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंटेरियन आप बनते हैं तो हर पार्लियामेंट एमपी का इख्तियार होता है कि वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज को आप बंद नहीं कर सकते ना। मोदी सरकार ने विपक्ष मुक्त संसद बना दी है। देशवासियों से सीधा सवाल है, क्या इस देश में अब प्रजातंत्र बचा है या उसका गला घोट दिया गया है? देश की मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है, संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। 75 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हो रहा है कि 143 से अधिक, लगभग 146 सांसदों को अब लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। क्या विधायिकाएं और संसद विपक्ष की गैरहाजिरी में चल सकती हैं? फिर संसद की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में चला लीजिए, अगर एक व्यक्ति को ही निर्णय करना है। तो इस देश के प्रजातंत्र पर भाजपाइयों द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा हमला जो बोला गया है, उसके विरोध में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, विपक्ष के समूचे दल आज विरोध प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं, सवाल इंडिया अलायंस और एनडीए का नहीं, सवाल इस देश में प्रजातंत्र को बचाने का है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसदों को सड़क पे आना पड़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए था सदन के अंदर अपनी बात कहने का, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसका लोकतंत्र में विश्वास उठ चुका है और वो किसी तरह से एक कोशिश उनकी ये रहती है कि विपक्ष विहीन सरकार चलाई जाए। विपक्ष को आवाज़ उठाने की, अपनी बात कहने की, प्रश्न करने की का कोई मौका दिया नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इसीलिए सड़क पर सबको, सारे सांसदों को और जो भी बुद्धिजीवी है उनको आना पड़ा है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है। अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है। इट इज बीइंग असैसिनेटेड। क्या अभी तक कितने सांसद कभी निलंबित किए गए हैं और कारण क्या रहा? कारण यह है कि हम चाहते थे कि जिस प्रकार से सदन में 2 लोग घुसे, स्मोक बॉम्ब डाला, उस प्रकरण में गृह मंत्री जी का बयान होना चाहिए। अब उसमें भी बयान देने का उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करें हम लोग? आज कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का। संसद के अंदर 150 के करीब एमपीज को सस्पेंड करना, ये हमारे इतिहास में कभी सुना ही नहीं गया।
और इस तरीके के जो कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का, उससे उस जनतंत्र और हमारे संविधान को बचाना है। यानी आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से दूर रखना ज़रूरी है। अगर हमारे जो देश का चरित्र जो है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको अगर सुरक्षित रखना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। According to reports, French President Emmanuel Macron has been invited as the chief guest for the 2024 Republic Day celebrations. Prior to Macron, US President Joe Biden was invited to grace the occasion, but he expressed his inability to travel to New Delhi in January. Earlier this year, Prime Minister Modi visited France, where he was the guest of honor at the Bastille Day parade in Paris. Since 1950, France is the only country to have received the maximum number of invitations to India's Republic Day celebrations. Now let's get you some update on COVID in India. The COVID cases were detected in the NCR region. 3 people have tested positive in Ghaziabad, while Noida has clocked in its first ever case this season. Health officials have collected samples from close family members on contacts of the index cases in these respective regions. The person who contracted COVID in Noida has a travel history to Nepal and has been kept under home isolation. Health officials have said that the people who have contracted COVID have fever and cough, which can be said to be moderate. Ghaziabad had reported over 1 lakh COVID cases during the first 3 waves of the pandemic. The suburb recorded its last COVID case in the December of 2022. It has seen more than 475 COVID-related deaths since the year 2020. Noida, which recorded its first COVID case in March 2020, has seen over 1.1 lakh cases since then. It has reported more than 494 deaths. Meanwhile, on 21st of December, Kerala recorded 265 new active cases of COVID-19 and 1 death, as per the Ministry of Health and Family Welfare. The Union Health Ministry has not issued any advisory making RT-PCR testing mandatory for travellers at the airport. The ministry had eased the COVID-19 guidelines for international travellers and dropped earlier requirements for RT-PCR based testing of a random 2% subset of travellers coming to India in the month of July. Union Health Minister Mansukh Mandavia reviewed the COVID-19 preparedness and stressed on the need to be alert and not to panic. And amid the spike COVID-19 cases, a total of 21 JN.1 variant cases have been detected so far in the country. Earlier this week, the ministry issued an advisory asking the states and UTs to maintain a constant vigil on the situation, besides ensuring adequate testing and sending positive samples for genome sequencing. We're staying on COVID. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah held a meeting with the COVID-19 Technical Advisory Committee and others at his home office, Krishna, and reviewed the preparation to tackle COVID in the state. Chief Minister Siddaramaiah announced the formation of a cabinet subcommittee to coordinate with the experts and implement their suggestions to contain the virus. The health department officials briefed the Chief Minister about the COVID-19 situation in the state, and the Chief Minister directed officials to take all the necessary precautions to avoid the spread of the virus. Meanwhile, in Maharashtra, 11 cases of COVID have been reported. This raises the active cases in Maharashtra to 53. 27 cases have been reported in Mumbai and 10 each in Palghar and Thane. The BMC meanwhile has said that it has taken stock of its preparation to tackle the rise in COVID cases, especially the new JN.1 virus. It has asked people to avoid crowded places. One case has been reported in the north of India, that is Lucknow, as well.
Cheers, Bay. Meanwhile, my colleague Vajiullah has the latest on the COVID situation from Bengaluru. Vajiullah, tell us, what is the latest on the COVID situation in the state? Good afternoon, ma'am. Well, Bangalore is seeing rise in cases. Yesterday we had 19 cases. Today we saw a rise of 24 more cases. And in the last 3 days, we've seen a death also. So yes, COVID cases are coming back. And this meeting that the health ministry had when they sent out their advisory was after seeing the rising cases in Kerala and Tamil Nadu. That's when the health ministry came with a meeting 2 days back, and they've given out advisories to the people on how they should take care of themselves in the coming festive season of December. As we know, December in Bangalore is a big festive time where you have a lot of people having their pujas, and then you have Christmas, and then you also have the New Year's that comes along with it. So advisories for elderly people have been set into place where they've said that people with above the age of 60 should wear masks and come out if they come out, and they should try avoiding from coming out for the next few days. People with severe heart ailment, kidney ailment, or liver ailment should stay at home only. Then they've also said that schools and colleges should also make sure that they have all the precautions that are in place. As of now, there are holidays in most of the schools for the Christmas vacations. So most of the schools are shut, but advisories have been given. Public places have also gathering has not been allowed. So there's no enforcement of these rules as of now, but then the advisories have been sent out. No sort of lockdown or zoning has been done. They've been told that we have precautions in place. There is nothing to panic, and the government is also. Right. Vajiullah, I see that the Health Minister Dinesh Gundurao is very proactive, and he's been out there, telling people how you take care, but just do not panic. I have one question to ask you. If there is an advisory for the senior citizens, that is 60 plus, to wear masks in public, I've seen a lot of visuals in Bengaluru. I don't see a lot of people wearing masks. Remember, Vaji, last time when there were marshals in Bengaluru who used to tick you off. As of now, it's not so strict, is it? Well, the scare also is not come to that level, is what we've learned from the health ministry, that it is not that scary, or it is not going to be what we've seen in the last 2 years when COVID was there. The JN virus is subtle, and they have strong vaccinations with regards to this, where it can be avoided. And with the number of cases that we've seen, it's also not to the level that we've seen in the last 2 years when the COVID was at its peak. So keeping all this in mind, the government has made sure that, yes, they have sent out advisories. They have told people to take their own precautions before they start implementing, or before the scare becomes even more scarier. So as of now, only precautions have been put into place, ma'am. And Dinesh Gundurao, as you said, has also held meetings with Health Ministry. The TAC has also met, and they've come up with these advisories. So as of now, it is not going to be stringent lockdown. We're not going to see any zoning of sort. People have been given that freedom. There is no ban on gatherings also. It has just been advised that they should make sure that they should take care of their health, have their precautions in place, because they've seen what they've seen in the last 2 years, and they should be the best judge of it. On the other hand, the government is going to departments, to government offices, to public places to make sure that there are no large gatherings. I also want to ask you, Vajiullah, how is the preparedness? Because this is a virus. When it spreads, how it spreads, and this is JN.1 is supposed to spread very rapidly. So has the government taken cognizance of the preparedness of hospitals in Karnataka, particularly Bengaluru, which is a melting pot, Vajiullah? Well, yes, hospitals have been advised. The hospitals otherwise also, since COVID-19, have placed their sanitations. They've always advised people to stay wearing masks when they enter hospitals. I have been to a few hospitals in the last few months, and I've seen that even when the COVID advisory was not in place, there was a mandatory thing that if you're in the vicinity of the hospital, you are supposed to wear masks. All right, that sounds really good. Thank you so much, Mohammad Vajiullah, for joining us live on the COVID situation in Karnataka. And time now to take a break in this bulletin, but I'm coming right back with lots more. Don't go away.
जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। Welcome back. A terrorist ambush on army vehicles on the way to reinforce a joint operation in Jammu's Rajouri district left 4 soldiers dead and 3 injured. The ambush came a month after terrorists killed 2 army captains and 3 soldiers in a similar gunfight in the district. The vehicles were navigating a blind curve at a spot known as Datyar Mode between Dera Ki Gali area and Bushfires. When they came under heavy firing, they were carrying personnel to an active operation to nab terrorists at the DKG area. The operation is still underway and further details are awaited. The latest attack was 6th since October of 2021 in the twin border districts of Rajouri and Poonch. In the 6 attacks, 29 army personnel have lost their lives, including 2 captains and 2 JCOs. हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है। उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहाँ 5 है, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कांप उठेंगे। क्या कर रही है सरकार? ये वो गाड़ी है, ये वो भारतीय सेना की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये फायरिंग है वो यहाँ पर की गई थी। 1-2 शीशे पे 2 राउंड जो फायर है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फायरिंग का राउंड है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर लगातार इस साइड से भी जो फायरिंग है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। दरअसल 2 ऐसी गाड़ियां हैं जो भारतीय सेना के वाहन थे जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग जो है वो की गई थी। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त भी महा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन कायर आतंकियों का खात्मा किया जा सके। ये वो इलाका है, हम आपको इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी। दरअसल सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स थी कि इसी घने जंगलों के बीच
आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं और ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से महा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान जो है इस ट्रक के ऊपर लगे हुए हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से 3 साइड से जो फायरिंग थी वो की गई थी। लेकिन इन सब के बीच अब एक बार फिर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय सेना की तरफ से महा ऑपरेशन चलाया गया है ताकि जल्द से जल्द इन घने जंगलों में जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि डेरा की गली के घने जंगलों के अंदर 3 से 4 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से कल महा ऑपरेशन चलाया गया। जब भारतीय सेना की तरफ से 3:45 पे रीइंफोर्समेंट मंगाई गई तो आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की 2 वाहनों पे फायरिंग की गई। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन भारतीय सेना के 4 जवान इस हमले में शहीद हो गए तो वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगातार आतंक के खिलाफ भारतीय सेना सुरक्षा बलों की तरफ से इसी थाना मंडी के इलाके में महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है रजौरी के थाना मंडी इलाके में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से सीआरपीएफ के विशेष कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष कमांडो जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका यहाँ पर सील कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की कोई भी अनुमति नहीं है। यही वो घने जंगलों का इलाका है जहां पे भारतीय सेना और आतंकियों के बीच जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि 3 से 4 आतंकी इन्हीं घने जंगलों के अंदर छुपे हुए हैं, जिसके लिए महा ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से कल चलाया गया। लेकिन आज तस्वीरों में आप देखिए कि एक बार फिर सूरज की पहली किरण के साथ ऑपरेशन को ऑन किया गया है और यहाँ पे आउटर कॉर्डन में जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सीआरपीएफ के विशेष कमांडो जो है वो यहाँ पर तैनात है। इनर कॉर्डन में भारतीय सेना के विशेष कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं। घने जंगल का इलाका है, यहाँ पर इन पहाड़ी इलाके में कई नेचुरल केव्स हैं जिसको आतंकी हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में ही रजौरी और पुंछ के इलाके में जो आतंकी कमांडर था उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया था कालाकोट इलाके में। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से एक बार फिर महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो भारतीय सेना की वाहनों पे फायरिंग की गई, तकरीबन 3 से 4 आतंकी इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। Moving on, Olympic medalist Sakshi Malik has announced that she's quitting wrestling following the election of Sanjay Singh as the new president of the Wrestling Federation. Sakshi revealed that she quit wrestling in protest after Sanjay Singh, a close aide of Brij Bhushan, won the election. हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। Meanwhile, Brij Bhushan distanced himself from the entire controversy. मुझको किसी प्रकरण में कुछ नहीं बोलना है और कृपया
कल जो मुझे बोलना था वो मैं बोल दिया। अब मेरा विषय समाप्त हो चुका है और मुझे परेशान मत कीजिए। The opposition also reacted to this development. Listen in to what they had to say. बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद ब्रिज भूषण ने कल भारत एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूं। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद। And it's time for a break in this bulletin, but I'm coming right back with lots more. Stay with us. It was my 14th birthday. On birthday, daughter waits for missing father. He was carrying a cake for his daughter. 49-year-old Birmingham-based Indian diplomat vanishes. He was grabbed and bundled into a car by 4 assailants. KLA claims responsibility. Demands Kashmiri separatists. Makbul Bhatt's release. Goli maro. Or fehl do. And within 3 days, they shot him dead. Abducted diplomat. Found murdered in Leicestershire. I said, who ordered to kill him? To me, he said, yes, I ordered it. And he never came home. Stop searching. Start streaming. Download the world's first news OTT. News 9 Plus. Ahead of the curve. वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। There is certainly a wall of capital coming into the clean tech, climate tech space, not just in India but across the world. This and more, streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. The scale of the attack was something that we were surprised at. David Hadley was a double agent. The Americans did not want him to be fully exposed. So all that he probably shared with the Americans was not shared with us in terms of intelligence. If we had that, I'm sure that we would have been able to deal with the situation far better. This and more, streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए।
सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। Welcome back. Amid extensive damage caused by Tamil Nadu floods, the Indian Air Force and Navy intensified the rescue operations in the flood-affected areas. Stranded people in several parts of southern Tamil Nadu have been rescued. Indian Navy is continuously providing food and relief materials to flood-affected residents in both Madurai and Thoothukudi. Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, accompanied by DMK MP K. Kanimuri, visited a relief center in Thoothukudi and distributed relief items. They also assessed the situation in the area. Defence Minister Rajnath Singh also assured that the center is extending all possible assistance to Tamil Nadu. The entire district is devastated and this is unprecedented rain. Nobody has seen rains like this, and especially Thoothukudi. It's generally been a dry district. We've always been water starved. So when actually, the alerts started coming and when we went to call people to safer places, they refused to come. They said, even from my grandfather's time, water has never come here. So you go, nothing will happen. So they just refused to believe. But then water came to those places also. And everything has been affected. Crops have been affected. The houses have been washed away and roads have been completely washed away. Bridges have broken down. And I just can't believe it's just a cloud burst. But still it can, cause so much of damage. I mean, the entire district is shaken and there are officers here, everybody is here, but, nothing is enough. A groundbreaking development is on the horizon as the first direct rail service connecting Kashmir with the rest of India is poised to open soon. This initiative marks a historical milestone in enhancing connectivity and accessibility to the picturesque region. The introduction of a direct rail link is expected to facilitate smoother travel and transportation of goods, fostering economic development in Kashmir. The project also underscores the government's commitment to bridging regional gaps and promoting inclusive growth through improved infrastructure. न केवल जम्मू कश्मीर के करोड़ों आवाम का बल्कि पूरे देश का सपना कुछ ही दिनों में स्वीकार होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट रेल लिंक जो है वो मुकम्मल हो चुका है और कुछ ही दिनों में वो उसका उद्घाटन की घोषणा हो सकती है। इस समय मौजूद है हम श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन में। यही वो रेल है जो कि कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये रेल जो है बानहाल तक ही कनेक्टेड है और उसके बाद करीबन 111 किलोमीटर का जो रेल लिंक है कटरा से लेकर बानहाल तक वो मुकम्मल होते ही ये ट्रेन जो है कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ेगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो इंटर कनेक्टिविटी है वो भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद का रेलवे इतिहास की अगर बात करें तो नए रेलवे लिंक्स में ये बारामूला श्रीनगर बानहाल का रेल लिंक जो है वो सबसे चुनौती बना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट भारत का है। तो कहीं ना कहीं 118 किलोमीटर का जो ये रेल लिंक है जो बानहाल से बारामूला जाता है वो फंक्शनल है और कुल मिलाकर 272 किलोमीटर ये ट्रेन जो है ट्रैवल करेगी और जम्मू तक जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरे देश को जो है कश्मीर से जोड़ेगा। इससे न केवल जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी देश के साथ बल्कि ट्रेड और टूरिज्म में भी जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर घाटी को बढ़ावा मिलेगा
और भारत के रेलवे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है और बीते कई दशकों में जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरे देश को इस सपने के स्वीकार होने का इंतज़ार था और इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि महर टनल जो है सबसे चुनौती भरी 3 किलोमीटर स्ट्रेच की जो टनल है वो बड़ी चुनौती बन चुकी थी और जिसे अब चुनौती पार करते हुए थ्रो कर लिया गया है और लगातार इस रेलवे लिंक को लेकर रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, क्योंकि यही वो रेलवे लिंक है जिसमें देश का और दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो चिनाब के पास बनाया गया है, जिसे चिनाब ब्रिज के तौर पर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं कई टनल्स सख्त पहाड़ियों और जंगलों से होते हुए ये रेल लिंक जो है कश्मीर घाटी को देश से जोड़ेगा और आखिरकार यहाँ के लोगों के सपनों को साकार होते हुए कहा जा रहा है कि देश के कई जो दिग्गज नेता है, प्रधानमंत्री भी इस रेलवे लिंक को उद्घाटन करने के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए कुछ ही दिनों में तैयारियां हो सकती है। कह सकते हैं कि ये रेलवे लिंक मुकम्मल तौर पर थ्रो करने के लिए तैयार किया गया है। कुछ कार्य जो बाकी है वो बहुत जल्द ख़त्म किया जाएगा और कई करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स के जो रेलवे लिंक के जम्मू कश्मीर में जो थे उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। Moving on, Parliament has approved 3 new bills to update old criminal laws, making punishments tougher for offences like terrorism as well as lynching. The bills, which were already passed by the Lok Sabha, were also approved in the Rajya Sabha. Home Minister I.N.D.I.A explained that these changes would bring in a new era for the justice system, moving the entire process online. The bills, known as the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshya, now await the President's approval to become law. The bills got passed in Rajya Sabha in the absence of many opposition MPs who were suspended for unruly behaviour. Amit Shah also highlighted key points such as defining terrorism and introducing stronger penalties for mob lynching. The bills also address crimes against women, organised crime, hit-and-run cases and set timelines for legal processes, emphasizing prompt justice and protecting the country's sovereignty. The following contain visuals that are disturbing, graphic, or sensitive in nature. Viewer discretion is advised. This material is intended for mature audiences and may not be suitable for all viewers. Please exercise caution while watching, and if you find such content distressing, we recommend discontinuing viewing. This disclaimer is provided to ensure awareness and to prioritize viewer well-being. It's been 77 days since Hamas's first attack on Israel. And today, more than 20,000 Gazans have lost their lives in the war between Israel and Hamas. Let's get you all the latest updates from the war zone right here on your screen. UNSC vote on Gaza resolution remains stalled. The IDF claims that it has destroyed the network of tunnels in central Gaza city. Over 1 in 4 people in Gaza are starving because of the war, according to the UN. Established operational control over Shejaiya neighborhood in Gaza city, according to the IDF. No longer are any functional hospitals left in northern Gaza, according to the World Health Organization. More than 20,000 Palestinians have been killed in the Gaza war. On Thursday, the Israeli army released footage showing airstrikes hitting what it claimed were Hamas targets in Gaza.
The IDF said it also located weapons in a school complex. In a written statement, the IDF said, and I quote, "During IDF activity in Jabalia, the soldiers enabled the orderly evacuation of the civilian population from a school complex southwards. IDF ground troops conducted searches in the school and located numerous weapons." Close quote. The statement added the Israeli military fighter jet struck the compound in Khan Yunis and killed Hamas terrorists there. Rocket siren in Tel Aviv disrupted a meeting between French Senate President Gerard Larcher and Israeli opposition leader Yair Lapid on Thursday. Footage provided by Israel's Yesh Atid, the party, showed the French delegation leaving the meeting room with Israeli party officials as rocket sirens sounded in the distance. Sirens wailed and rockets exploded overhead, intercepted by Israeli air defenses in Tel Aviv. The armed wing of Hamas said it had fired the salvo in response to the Israeli killing of civilians. A report released by the UN and other agencies highlights the dire humanitarian condition in the Gaza Strip following Israel's bombardment and siege on the territory in response to Hamas's 7th October attack. A quarter of Gaza's population is starving. Released on Thursday by 23 UN and non-governmental agencies, the report found that the entire population in Gaza is facing a food crisis, with 5,76,600 at catastrophic or starvation levels. And in other international stories, Donald Trump left an enduring mark on the U.S. Supreme Court during his presidency, securing a 6-3 conservative majority. Now, as the court gears up for the 2024 presidential elections, it faces pivotal cases tied to Trump's involvement in the lead-up to the 6 January 2021 Capitol attack. In its politically charged landscape, the court's decisions could echo the spotlight it found itself back in 2000, when it played a decisive role in handing the White House to Republican George W. Bush. The upcoming ruling on Trump's appeal in the Colorado case will likely set the tone for similar efforts nationwide, making it a critical moment for the court and the electoral landscape. Despite its conservative bent, the Supreme Court rebuffed efforts by Trump and his allies to overturn Joe Biden's 2020 win. Trump's ally, Rudy Giuliani, filed for bankruptcy days after a jury ordered him to pay over $148 million in damages for defaming 2 former Georgia election workers. The bankruptcy petition was submitted in the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Giuliani, a key figure in promoting false claims of a stolen 2020 election, reported between $100 million and $500 million in liabilities and $1 million to $10 million in assets. His filing listed debts to the 2 election workers and included President Joe Biden's son, Hunter Biden, as a creditor. The Internal Revenue Service and New York State Department of Taxation and Finance were also listed as creditors. Western Australia saw devastating bushfires on Thursday, destroying at least 2 homes in Parkerville, 20 miles east of Perth. Residents faced evacuations as the blaze hit emergency levels, later downgraded.
Amidst challenging conditions, 4 emergency level fires occurred in the past 48 hours with hot, windy weather, heightening the fire risk and complicating firefighting efforts. 2 men were hospitalized with non-life-threatening injuries. News coming in from Pakistan. The provincial government in Pakistan deployed artificial rain for the first time in Lahore to address dangerous pollution levels. Cloud-seeding planes were utilized over the city, known for its severe air pollution, in an effort to combat the issue. The air quality in Lahore has been particularly bad in the past few weeks, and the Punjab government there employed several tactics, including the early closure of businesses and keeping schools off for 2 extra days to help improve the quality of air, but it all came to naught. Experts say even very modest rain is effective in perhaps bringing down pollution. Residents briefly returned to an evacuated Icelandic fishing town on Thursday for the first time since a volcanic eruption. Their visit aimed to check on homes and collect belongings. Scientists reported no visible volcanic activity 3 days after the eruption spewed lava and smoke high into the air on the Regens Peninsula. A great crack in the ground shows where a volcanic eruption threatened the Icelandic fishing town of Grindavik, though lava flows missed the only town close by. Evacuated residents checked on their homes and collected belongings on Thursday, returning briefly for the first time since it happened. The 4,000 residents of Grindavik, about 25 miles southwest of the capital Reykjavik, were evacuated in early November because of intense seismic activity. Guðjón Emil Gartharsson doesn't expect to be allowed home imminently. How this is, I don't think, not soon, but maybe in the future, hopefully, but we'll just have to see because the crack goes through the town. So we'll just have to see if it's going to survive. Scientists who flew over the area said lava flows had continued to diminish, and no volcanic activity was visible, 3 days after the volcano spewed lava and smoke high into the air. Thorstein Einarsson says he'll come home as soon as authorities let him. My future is here. I will be here. My kids will be here. We are going to do everything we can to make this town good again. The decreasing lava flows have eased worries of a repeat of the international travel chaos caused by ash from another volcanic eruption on the island in 2010. The Icelandic Meteorological Office said on Thursday it was still too soon to declare the eruption over. That's all we have in this bulletin. For all the news and analysis, make this your destination. News 9 Live. Thank you for watching. On October 27, 2023, the world awakened to a new crisis. A new turn in a 70-years-old civil war. One that has grave implications not just for India, but also regional stability in Southeast Asia. Today, News 9 looks at the mayhem in Myanmar.